Fine. So now let's understand one more area of inheritance. So what I will do, I'll create a class name as parent main method and one class name as child. Okay. Okay. So to do inheritance, what I have to do? What I have to do over here? I want to inherit this class over here. Extends keyword, right? So extends parent. Simple. Now, whatever I mention over here, say for example, integer I is equal to 10. Okay, this variable I can access over here using child class object, है ना? अगर हम इनहेरिटेंस नहीं करते तो मुझे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट करना पड़ता और उससे मुझे एक्सेस करना पड़ता पेरेंट क्लास का ही वेरिएबल लोकल वेरिएबल. बट अगर मैंने इनहेरिटेंस किया है so then in that case I have to create object of child class itself. Okay. And using that object I can now access I of parent class. Right? This is possible. So let me write down this up. Now you have seen that okay. Now if I want to change the value of I, so I can do that also, isn't it? I can change the value of this parent class over here in child class because this is a non-static variable, है ना? And now we need to understand one keyword called as final. So final behaves as a constant. Constant, what it does, it makes value of variable as constant. अगर आप वेरिएबल पे अप्लाई करते हो तो आप तीन जगह पे अप्लाई कर सकते हो, वेरिएबल, मेथड एंड क्लास. Okay, so we'll understand at variable level. So I'll say final at over here, control S. Okay. Now you are able to see a error. What it says, final field parent dot I cannot be assigned. That means you cannot assign this 30 to I because it is this final keyword is restricting you to change the value of I. Currently the value of I is 10, isn't it? So if you are trying to change the value of I anywhere, अगर आप parent class में भी change करोगे या child class में, वो आपको error ही throw करेगा. Let me access it over here. Parent p parent and I will say p dot I is equal to 40, say for example. Again, I'm getting an error over here. Right? If I remove this final, then is it possible? Yes. Then it's possible. So now I'm not getting an error. So what do you understand from this part? Right. So when I make it as final over here, the value becomes constant and then I cannot change the value. So अगर आपको कोई value या कोई variable आप नहीं चाहते कि programming में कोई भी any tester or any developer should not change that particular variable's value while writing the code, तब आप उस variable को final करो. सॉरी स्टैटिक के ऊपर आता है फाइनल तक. ठीक है, clear this portion? Sure. Now so I'll comment this part and I will comment this part. Now we'll go to the overriding portion as in method level पे.
तो हमने देखा पब्लिक void display and I will say sys out I, okay, and I will copy this. We'll see. Okay, I can do this. This is overriding. This is method overriding. अगर parent class में आपने कोई एक method बनाया, अभी the logic is same. Right now the logic is same. So अभी वो purpose नहीं है मेरा. मुझे आपको सब final का समझाना है. तो यहाँ पे एक method बनाया display method and child class में same signature. The one which is highlighted is called as signature of a method. Now what if I do, तो यहाँ पे possible है overriding करना, but अगर मैं यहाँ पे final लिख देता हूँ, so what I am trying to do over here, I am trying to make the declaration of this method as final or constant. In that case, I cannot override that method. See, cannot override the final method from that. यानी अगर आपको restriction रखना है कि कोई method है, आप उसको override नहीं कर सकते. That restriction, if you want to keep, then declare it as a final. Variable पे value change नहीं कर सकते. Access कर सकते हो, उसी value को access कर पाओगे, but change नहीं कर पाओगे value. Same way method में आप see overriding में ही हम लोग definition change करते हैं. Overloading में तो change, overloading में तो पूरा signature ही अलग होता है. Overriding ही एक possibility है जहाँ पे आप method का definition change करो. तो final अगर आपने लिख दिया तो overriding possible ही नहीं है ना. Otherwise तो आपका method का नाम change हो गया, कुछ change हो गया तो फिर कोई problem ही नहीं. So this final at method level only restricts overriding. Okay, so I'll comment this portion. Let's say final at method level restricts the user to override. Clear this portion? Now at class level. So public class parent. Okay. What if I do final over here? क्या हो सकता है possibility? Extend नहीं कर पाऊंगा. Very good. So final at class level, I'll say C. The type child cannot subclass the final class parent. So you cannot do inheritance. Okay, that is the restriction. You can keep using final. Hardly use होता है, but अगर आपको करना है restriction तो आप कर सकते हो. So I'll write it down over here. Class level restricts user to okay. Understood this portion? So this is final keyword. Majorly हम लोग variables पे use करेंगे. जैसे URL है, application का URL है, उस पर आपको testing करनी. आप at any given point of time while testing, I don't want that URL to be changed. या फिर कुछ जैसे मेरे drivers होंगे, driver की exe होगी, वो कहीं ना कहीं save होगी. वो driver की exe में string होगा, किसी एक variable में store करूँगा. And I don't want at any given point of time one should change that particular location. So I will make it as final. Okay. So now I'll go back to ये समझ आ गया. Now we'll go back to constructor. Okay, so I'll come back to this portion again. You guys understood about constructor, right? So अगर मुझे इस class का constructor बनाना है तो how can I create a constructor? Yesterday we discussed, right? So how can I create a constructor? Parent, very good. Without any parameters, it should be fine.
जरूरी नहीं है. Now I will say sys out and I will say parent class constructor call. Okay, so if I run this program, what should happen? This line will get executed. So this will get executed, isn't it? Because यहाँ पे automatically call हो जाएगा ना, right? So this line should get printed. The parent class constructor call. Okay. Now what I will do, I will create child class constructor. Okay. See ये भी this is also covariant. यहाँ पे भी covariant apply हो रहा है. कैसे apply हो रहा है? ये एक method है. Method का नाम क्या है? Parent. That is इस particular class, ये parent class है, तो उसका constructor है. और ये child class का constructor है. ये भी एक method है ना? तो यहाँ पे हम covariant को एक तरह से देख सकते हैं actually. रिटर्न डेटा टाइप इसका चाइल्ड इसका इंस्टेंस ही होता है, इसलिए हम लोग कोवेरिएंट यहाँ पे करें. नाउ आई विल से दिस आउट चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर. ओके, सो इफ आई रन दिस प्रोग्राम व्हाट शुड हैपन? सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, दिस पोर्शन विल एग्जीक्यूट. सो व्हाट दिस विल डू, दिस विल कॉल दिस और उसके बाद सी डॉट आई, दैट इज ये आई का है पेरेंट क्लास का वेरिएबल, तो 10 जो भी वैल्यू है प्रिंट करेगा. नाउ सी द आउटपुट. So what happens over here? Parent class constructor being called. हमने तो कॉल नहीं किया उसको, हमने तो सिर्फ चाइल्ड क्लास को रन किया, right? Still your parent class is constructor is being called. So this you have to understand and note down that whenever you create an instance of a child class, parent class constructor is always called by default. वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, आप उसको एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते, but parent class का constructor automatically call हो जाए. That this concept is also many times asked in interview. So I will say parent class constructor is called implicitly when instance of child. Understood this question? So what we understood about final at variable level, final at method level, final at class level, and then constructor, how the constructor is being called. Now we understand one more new topic. Math. Say okay.
this field. Let me just return object variable. As of now, we do this way. Because what happens in case any method which is static, you cannot call a non-static variable. हमने देखा था, right? We have to call using object. Main method static है, तो हमें क्या करना पड़ता है? Object create करना पड़ता है, और फिर object से ही I को access कर सकते हो. Without object, you cannot access I, isn't it? Now what I will do, I will create another static say return I. So this is overloading of methods, and overloading में हमने दोनों मेथड को स्टैटिक रखा है. अगर मैंने स्टैटिक रखा है किसी भी मेथड को, तो डू आई नीड टू एक्सेस यूजिंग ऑब्जेक्ट? अगर किसी भी मेथड को मैंने स्टैटिक रखा है, या किसी कोई भी वेरिएबल होता है अगर वो स्टैटिक होता है, तो डू आई नीड टू एक्सेस इट यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास? The static is nothing but this a variable school name, string type का है, and it is static. It is also called as class variable. तो हम कैसे एक्सेस करते हैं? Class dot, right? Class name से एक्सेस करते हो. Class name dot school name, isn't it? आप एक static variable को किस तरह से एक्सेस करते हो? Class name. वैसे ही किसी भी मेथड, स्टैटिक मेथड है, उसको भी आप कैसे एक्सेस करोगे? क्लास नेम, नॉट ऑब्जेक्ट. ओके, सो यहाँ पे क्लास है डॉट, you can access display and display. So display method has been accessed and dot. Okay, so what did you understood this with this part? I'll remove this portion, इसकी जरूरत नहीं है. Okay, so what do you understand by this program? That a static method can be overloaded, or you can say while doing overloading, Harshit, can you bring laptop charger cabin? While doing method overloading, okay, we can overload a static. This is clear? Understood? See, ये सब चीजें आपको पूछेंगे. You understood method overloading, right? But आपको इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि can you overload a method? Yes. Okay. What are the rules set for method overloading? Okay. Then they might ask you whether you can overload a static method or not. So these kind of questions they might ask. वो फाइनल जो लिखा था ना, फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो वो फाइनल वेरिएबल हम लिखेंगे फाइनल, वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे. एक्सेस कर पाओगे? एक्सेस तो कर पाओगे. टाइम पर चेंज इन वैल्यू चेंज नहीं कर. अगर स्टैटिक की है, स्टैटिक की है तो चेंज कर पाएंगे. हाँ, लेकिन अगर फाइनल और स्टैटिक दोनों लिखा है तो नहीं कर पाओगे. तो स्टैटिक में आपको सिर्फ इतना समझना है कि स्टैटिक क्लास वेरिएबल है, क्लास से ही एक्सेस कर सकते हो.